Are we on mute? She is not. हाँ मतलब तुम्हारा सिस्टम मेरा सिस्टम. Can I see children? अच्छा वो नहीं हो तो ये ऑडियो किसके सिस्टम से मेरे. हाँ तो तुम अनम्यूट करोगे ना तब unmute करेंगे। तो अनम्यूट करके एडमिट ठीक है. Okay, ending now. Thank you. Okay. Hello, everybody. Are you able to see me and hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is everyone set? Yeah? All right. So hello, everyone, and welcome to our amazing summer camp, eCamp Extravaganza. My name is Anubhuti, and I'm thrilled to be your guide for the next 2 days as we embark on a journey filled with fun, creativity, and learning. We have an incredible lineup of activities that will keep you entertained, engaged, and excited. Today is going to be packed with fun right from the start. First up, we have our Zoom in style contest. Get those creative minds ignited and set up your coolest virtual backgrounds. The kids with the best background will win a fantastic prize, so make sure to impress us with your creativity and style. Next, we'll move on to Chop Chat Chew. That's our Cookalong kitchen, where you'll get to be our junior chefs. I hope you're fully ready with the ingredients. Yes? Yeah? Great. So we'll be making a delicious, refreshing summer drink and a healthy, tasty salad. And you'll also be picking up interesting cooking tips on the way. And don't worry if you're not a pro in the kitchen, we'll guide you through every step. So just keep at it. And as we reach the end, you'll have yummy treats to enjoy. And to wrap up our day, we have a thrilling trivia quiz. Test your knowledge on a variety of environment topics, and you could win awesome prizes. So make sure you pay attention and bring your A game. Remember, the most important thing is to have fun and enjoy every moment. I'm here to help you with anything you need, so don't hesitate to ask. So, campers, before we dive into our exciting activities, let's go over some important rules to ensure that you have a fantastic time and a smooth experience. First of all, you'll all be muted during our session, which is of 2 hours, except when you're unmuted individually to share your responses. But don't worry, you can always put your comments and questions in the chat box, and our team will respond to you quickly. Second, please make sure you have entered the session with your first and last name so that we can address you clearly. And third, ensure that you have a stable internet connection and that your audio and video are working properly, right? Very important. So for our Chop Chat Chew session, which is the Cookalong kitchen, have all your ingredients ready and placed right next to you. This will help you follow along easily and make the activity more interesting. And now we have some exciting news about prizes. Anyone who fully attends our session today and tomorrow with their video on throughout will be eligible for prizes. So stay engaged and keep your cameras on. But in case you miss out attending a few minutes, don't worry. You'll still be eligible for a participation certificate, but only if you attend at least 100 minutes out of the 120 minutes of our session today. So don't miss more than 20 minutes and make sure you stay with us for the majority of the time. Also, we'll be announcing the winners for the Zoom in style contest and the trivia tomorrow. So do your best today and look forward to the results tomorrow. Lastly, and most importantly, have fun. This eCamp Extravaganza is all about enjoying yourself, learning new things, and making great memories. So relax, participate fully, and enjoy every moment of your time together. So are you all ready to get started? Please give me some thumbs up in the reactions. Yes, Yeah? ma'am. Oh, wonderful. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. So give me thumbs up like this. Yeah? Great. So let's kick off this summer camp with a big bang.
So superstars, let's get set go with the Zoom in style contest, where creativity meets virtual backgrounds. We are challenging you to showcase your imagination and design skills by making you set up the coolest virtual background you can think of. We'll be giving you two topics. And you'll have to quickly hunt for them on the internet, download an interesting image based on them, and set it as your background. To help everyone get the hang of it, we'll start with a trial round. So you can look at these steps, which I'll show you in a while. I would now request my team to share the presentation. All right, so are you able to share this presentation on your screens? Right? All right, cool. No? Give me a moment. All right. So I'm sure you would be able to see the screen clearly right now. Yes. Great. So let's begin with the Zoom in style contest. We will first tell you some steps as to how to set your background for those of you who do not know. Okay. These are very simple procedures. We have steps for those who have logged in on the web through their laptops and for those who have logged in through their mobile phones. All right. So just stay a little patient. So step one, for all those who have logged in through their computers, that is the laptop. First step is that you join the summer camp, which is our Zoom meeting. I'm sure you're already there. The second step is to download an image that you want to use as your virtual background. Yeah. So you can download any image from the internet. Then you have to click the arrow right next to the start video and click on the choose virtual background option, which is the third from the top. Okay. And the next step is that you click on the plus button over there and you add an image, whichever you have chosen. And then choose it from here, which is your download section, where you would have downloaded an image. You click it, open it, and that's how you will be able to set your virtual background. Right? Okay. So let me go a little slowly once again and repeat all the steps for you for those of you who lost me in between. Let's go back. First, for all those who have already joined the Zoom meeting, just download an image from the internet, right? Then download it, come back to the Zoom, and in the Zoom, press this menu right next to your start video button. Choose the third option from the top, which is choose virtual background. When you click that option, a box will open. Click the plus option on the side and choose add image. Okay. And then another box will open. Choose the image that you have downloaded. Click it, open it, and it will be set as your virtual background. Okay. Got it? Now we'll go through the steps for those who have logged in through their mobile phones. Right? And here's how you'll learn. This is my wonderful friend Sakshi, who will be seeing you tomorrow. All right. So for those logging in from their mobile phones, the first step is to click on the More option. Do you see the three dots on the bottom right of your screen? You need to click that. Right? When you click that, you will see a couple of options like these. The third option from the top again
is backgrounds and effects. Click that option, right? When you click that, you will see something like this, virtual backgrounds. And in the virtual backgrounds, click the add option, the add button plus sign on the right side, right? Once you click that button, you will see a lot of options. Then you can choose any photo from wherever you have placed, on your phone gallery, in your Google Photos, in your Drive, anywhere where you have a good photo, which you want to set as your virtual background. Okay, and voila, here you go. You will have your virtual background ready, right? So I'm sure all of you are now well aware of how to set a virtual background, right? Are we ready for the contest now? We are all set? All right. So get set, go, and zoom in style with the two topics that I'm going to announce in a moment. We are going to give you 30 seconds to set the virtual background on the topic which I'm going to announce right now, right? So stay alert and listen to the topic very, very carefully, okay? Anybody who has shown the best creativity and has responded most promptly will be eligible for our prize, which will be announced tomorrow. Let's test your virtual background once. Go to the YE website and download any poster. Set it as your virtual background. All right. Are you able to do that? I'm yet to announce the topics. So this is just a trial run that I'm giving you. Go to the YE website. You can see the link to the website on the chat strip. Download any interesting poster from there and try to set it as your virtual background. Let us do this trial run once, and then I will announce the two topics. And you can then take your first step towards an exciting prize. I can see so many of you. I can see so many of you trying to make an earnest attempt. Vihan, are you able to set a virtual background by yourself? Samyukta. Samyukta, you've set the virtual background without poster. It looks so wonderful. I think you have got a very good hang of how to set the virtual poster. I'm still looking for others to catch up. That's great. It's nice to see so many of you with your interesting virtual backgrounds. Shaurya, you've done a fantastic job. I think you have learned the trick of the trade. Amanpreet, you must get started. The contest is just about to begin. Gurupurab, your background looks very nice. Very leafy, very interesting. Right? Are you able to now understand how to set the background? Anybody with the best background will get a good prize. Okay, so 1, 2, and 3. So the first topic of your Zoom in style contest is a traditional summer drink of India. Listen carefully. A traditional summer drink of India. Your time starts quickly.
Go to the net, think of a traditional drink, download it, set it. Go to the net, think of a traditional summer drink of India, make sure it is Indian, and set it as your virtual background. Quickly, quickly, quickly. Okay. Once you have downloaded it, go to the menu button right next to the video button. Click on that arrow, that little arrow. Choose virtual background, which is the third option there. A window will open. Click on the plus sign. Set it as your virtual background and show it to us. All excited? Buzzing with activity? Oh, wow. Aryav, I think you have quite got it. Great. Shaurya Mittal is also close. We have Rakshita Rawat also pretty close. Rakshita, good job there. Quickly, quickly, people. A traditional Indian summer drink. It has to be a summer drink. It has to be a traditional Indian drink. Wow. Gurupurab, good stuff. Abhay Kumar, you've also done a very good photo. You've also taken a very good photo. My team is scanning through all your virtual backgrounds really closely. So make sure you give your best. Shaurya Mittal, this is really good. Right? Okay. So very good job there. Now let's get on to the second topic of the day. Okay. Now, for those of you who couldn't catch up, this is a second time where you can participate. So be very alert. The second topic for your Zoom in Style contest today and to win exciting prizes tomorrow is a famous children's novel. Think of a famous children's novel very quickly. Go to the internet, download a picture, set it as your virtual background. Click on the up arrow, choose your virtual background, click on the plus button, add that image, and show us where you are teleported to. A children's novel. That's your topic for the second round. Think of an interesting children's novel. Which is the last book that you had read? Ah, Shaurya, you're back with a bang. Gurupurab is also there. Very good. I hope you're enjoying the contest as much as I'm enjoying it. Pragya, why are you lagging behind? Think of a children's novel no quickly. Download an image. Jaldi. Done it. Then put it up. Set it as your virtual background. Click on the plus button. And for those who are logging in through mobile phones, click on the more option, the dot. Click on the virtual background option. Click on the plus button. Add an image. Right away. Quickly. Quickly, quickly, quickly. You need to show more energy. This is the summer camp. Devendra,
I think you have done a good job. Very nice. A lot of novels over there. Ah, Arav, you've got Harry Potter. No wonder. I was looking for a Harry Potter somewhere. More? Rihan? You're there. All right. Last 5 seconds. Okay. Pragya, Arun, Indu, you all need to catch up. If there's any difficulty, please put it in the chat box. Right? Time up. I can see a few hands raised. We'll address you quickly. Okay, great. Thank you. So now my team will scan through your interesting backgrounds very closely, and you will get some exciting winners tomorrow. Okay. Now let's get back. I think this was a good warm-up. So what's next for our activity today? So friends, I hope you're all ready for a deliciously fun time because it's time for our Chop Chat Chew session. In this Cookalong kitchen, our amazing in-house food guru, Vibha Vashne, will guide us in making a refreshing summer drink and a tasty salad. Make sure to follow her instructions closely. Stay safe while handling your ingredients and tools. And most importantly, enjoy the process. This is your chance to create something yummy to share with your friends and family. So let me welcome Vibha in the session now. Hi Vibha, thank you so much for joining us. Thank you, Anubhuti. It's a pleasure having you. Pleasure. So Vibha is my dear colleague. She is a consultant with the Center for Science and Environment, New Delhi. She has around 24 years of experience as a journalist and is a writer with us. She enjoys delving into linkages between society, science, and environment and writes on health, food, and biodiversity, among others. She has conceptualized our first food series, which connects the dots between biodiversity, nutrition, health, and livelihood. She also holds a PhD in botany and loves spending time around plants when she is not in the kitchen. So Vibha, tell us something about the cook-along session today. You have asked some very interesting ingredients for our children to get. So what are you going to make for us today? First of all, thank you, Anubhuti, for calling me. And then for the question about the background on traditional drinks, the drink that we are going to make today was not shown by anyone, obviously. It's a very different kind of a drink. So the traditional beverage that we are going to make is made out of an edible gum. Wow. Which is called Gonkatira. Okay. So it's is it different from the regular goands that we understand? Yes. The regular gond is consumed during winters. Okay. It warms your body. Okay. Whereas Gonkatira cools your body down. So it's generally used in summers to prepare these beverages. Oh, that's wonderful. Okay. And is that all that we have today, or do we have something more in store? We have something more. Okay. We are going to make a very nice salad with millets and fruits. Okay. So we are going to use the king of fruits, mango, to make this. And to make it more healthy, we are going to use a papaya, a raw papaya. And we will have a very nice and easy salad, which anyone can make. It's going to be a cold salad because everyone wants to have cold food during summers. Certainly. So we are going to have cold food. And I hope you will all enjoy this. And I'm sure our kids will enjoy this. And I'm sure they have all the ingredients ready with them right next to them. So children, get set, go to Chop Chat Chew. Bon appetit. Thank you, Anubhuti. So we are going to start. I hope
everyone was able to find the ingredients. I will show also the ingredients alongside. So this is gond katira, and this, as you can see, these are little crystals, and these are edible gums, which you can find in any grocery shop. So what we had asked you to do is to soak the gond katira overnight, and we had asked you to soak 3 of these crystals. So after soaking, I hope all of you managed to get this kind of a jelly uh, ready. So we are going to use three for we are going to prepare 2 glasses today. So for each glass, we would need around 1 spoon of this jelly. So here's 1 spoon of this jelly here. One small spoon, not too much. It's not, you should not have too much of it. It's very cooling. So, sorry? Presentation. Yeah. I will keep on saying things now. Okay. So, sorry, we had prepared a presentation which kind of I jumped over, but does not matter. We will still prepare something very nice. So don't worry about that. And we'll get back to the presentation after this, and you will be able to hear about the ingredients that I'm going to use in this. So we have already put the gond katira jelly into our jug in which we are going to make this. We will add rose syrup into this. You can use as much as you want, but generally for 1 glass, it should not be more than 1 spoon. So we are going to put 2.5 spoons in this. Then we are going to use a sweetener, but that is only if we need to. We have to put milk in this. So here's around 250 ml of milk, 150 ml of milk. It smells very nice because of the rose. And we will need to put some water in this. So here's the water. We are going to put around 2 glasses of water, 400 ml. And here it is. So now what we are going to do is to mix it, and we will see if it is okay or not. Yum. So this is perfect. It should be all chilled. If you want to make it sweeter, either you can put the rose syrup or you can put more of a little bit of honey into it. I'm going to put a little bit of honey, and I will tell you why I'm putting honey in this. So here it is, a little bit of honey, and I'm going to mix it again. As you can see, the gond katira is all dissolved in this, and this is perfect. Yeah, sorry. Okay. Okay. So I will also, now I'm pouring this down in a glass, and I will explain what all I have put in it. Now, can I have the presentation for this? That would be perfect. Yeah. Let's mix it up again a little bit. Perfect. So what did I do? This is, now you can see the presentation. Let's move on to the first slide. As I mentioned, we use gond katira. Why do we use gond katira? Gond katira is an edible gum. It is collected in form of tears from a special plant which is called Astragalus gummifer, and it is used in a variety. You already eat it, so it's not that you are going to be consuming this for the first time. You already have it in lots of sauces and ice creams and jelly and everything. So it's already used in a lot of industrial processes. Why do we have this? Because it helps in retaining water. मतलब कि गर्मियों में इतनी धूप होती है तो आपके पेट में थोड़ा सा पानी रहना चाहिए. So it helps you retain water in your stomach. फिर उसके बाद ये हमारे स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. ये इसमें गट के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, आपको पता होंगे, एंड वो सारे माइक्रोब्स को कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, उनको कुछ अच्छे वाले माइक्रोब्स को
जीने के लिए कुछ सबस्ट्रेट चाहिए होता है, कुछ खाना चाहिए होता है, तो वो ये उसको बेनिफिट देता है। ऑल्सो क्योंकि ये एक पेड़ का गम है, इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अ ट्री एंड इट कम्स वेरी स्लोली, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो आप इसको खाएंगे और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं आपको हिंदी में एक बार फिर से सारा प्रोसेस बताऊंगी, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे। तो इसके अंदर हमने डाला था, अच्छा नहीं, पहले मैं ये नहीं बताती, पहले मैं आपको इसके और जो इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके अंदर हमने और क्या डाला, हमने इसके अंदर रोज सिरप डाला। अब हमने रोज सिरप क्यों डाला इसके अंदर, बिकॉज दिस ऑल्सो कूल्स डाउन योर बॉडी एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। हमने और इसके अंदर डाला था दूध, मिल्क, चिल्ड। So first of all, it's good for summers. Secondly, it's full of proteins. It has fat soluble vitamins like vitamin D, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं, हमारी बोन्स को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। और इसलिए इसके अंदर दूध हमने डाला है। इसके अंदर हमने ठंडा ठंडा पानी भी डाला है। Why have we put water in this? Because that during the summers you must have heard a lot about the heat strokes that people are facing. इतनी गर्मी में पानी अगर बॉडी में नहीं होता है तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उससे आपको चक्कर आ सकते हैं, यू फील वेरी सिक, यू लूज कॉन्शियसनेस। तो उस टाइम के लिए ठंडा पानी आपको हाइड्रेशन देता है, इट्स गुड फॉर द बॉडी। सो और सारे जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं आपके डिटॉक्सिफाई होने का, ऑल दिस happens because of water. So we use water in this. Can we get back to the camera so I can talk in Hindi and show the recipes. So once again, अब मैं हिंदी में बता रही हूँ, ये हमारा गोंद कतीरा है। ये बाजार में किसी भी आपको ग्रोसरी की दुकान पे मिल जाएगा, किराने की दुकान पे मिल जाएगा। उससे स्पेसिफिकली गोंद कतीरा मांगिएगा, वो खाली गोंद नहीं होता, ये दूसरे तरह का होता है। अब जब हम इसे रात भर पानी में डुबोते हैं तो ये एकदम फूल जाता है। हमने डाले थे ये सिर्फ 6 क्रिस्टल डाले थे और हमारी कटोरी भर के इसका जेली बन गया। अब ये जेली अगर मैं और पानी डाल दे तो ये और भी बढ़ जाता। तो इसलिए इसको जितना आप फुलाना चाहे उतना फुलाइए, और ज्यादा नहीं खाना होता है, ये बहुत जरा सा ही खाना होता है। इसके अंदर हमने डाला था रोज सिरप। इसके अंदर रोज सिरप हमने डाला है इसको ठंडा करने और ताजगी देने के लिए। रोज से हम डिस्ट्रेस भी होते हैं और ये इसको एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी देता है। हमने इसको थोड़ा अगर मीठा करने की जरूरत पड़े तो हमने इसके अंदर हनी डाला। हमने हनी क्यों डाला, चीनी क्यों नहीं डाली? चीनी में सिर्फ हमारे पास कैलोरीज होती है, उससे ज्यादा अच्छा है हम चीनी की जगह हम थोड़ा सा हनी डालें। ये ठंडी ड्रिंक है, गर्म ड्रिंक नहीं है। सो इट्स गुड टू हैव एड हनी टू इट, so it gets a sweetness also. You also get a lot of nutrients and micronutrients which are very good for health. तो ये सब कुछ डाल के आप हमारा ये ड्रिंक बनाया, ये हमारा गोंद कतीरे का ड्रिंक तैयार है। और अब मैं इसको पी के देख रही हूँ, आप लोगों का बना क्या? ये किसी का बना? कोई दिखाना चाहेगा अपना ड्रिंक? ये जो पी के बोल सके, कोई बताए मुझे। You can tell me, you can share your story. Did you even get the gum in the market? Can tell me if possible. Yes, ma'am. Ma'am, I got all the ingredients in the market, and I have made it. And when I tasted it, it was, ma'am, so tasty, and all of the stress from my body was removed, and I felt literally the best, like in the whole month. This is very good. That's very good. Thank you. And but the gum does not have any taste. It just has a lot of nutrients. So the taste you had was of the rose syrup and the honey. So and the milk. I'm so happy to know that you like milk and the taste of it. That's very good for health. So Thank you Anubhuti, so do you much. want to try this? Yes, I think I'm the lucky person today, and I'm going to try this drink for the first time, and I'm really excited. I'm sure all of you are also excited and have got your drinks ready. Have you? Yeah? Let me go. This is actually really good. This is cool. This has rose fragrance. This is refreshing. This is everything that you need in this scorching summers.
I'm sure you all are troubled by a lot of heat outside. So make sure that you've got your drink right and you're enjoying the eCamp extravaganza. Vibha, thank you so much for this Thank you. wonderful drink. Thank you. I think it's really easy to make and our children can follow it really easily. All the ingredients are easily available and their environmental importance is also what you've explained to them so beautifully. Good, good. I think this is the best way to prepare our little environmentalists. So did For the anyone make future. it? Has anyone shown their drink? Oh, so some of you have also raised hands. That's cool. Let's get some of your reactions. Someone is drinking. That's great. Can anyone lift their glass of drink like this? All right, I can see somebody already make this. In the bag? No. Samir. Samir? Hi, Samir. Can you unmute yourself and tell us how's your drink? Very nice. Nice. What did you like about it? Is it tasty? It's very cool and refreshing. Yeah. Easy to make? Yes, ma'am. Yeah. Nothing difficult about it? Gets ready within minutes? Sushita, can you pass on their name to me? Nevada. All right. So, Nevada, can you please tell us how are you finding the drink today? Please unmute yourself and tell us your experience. Oh, it's wonderful to see you prepare it right away. Nevada, we can't hear you. Please put your comments in chat. Were you able to find the ingredients easily? There's Oh, we have another person. We can't see the name. Manisha? All right. Manisha Verma? Hi. Manisha, where are you from? Please unmute yourself and we would love to hear you. Yes, ma'am. Hi, Manisha. How are you doing? I'm good. Where are you from? Which school? Which place? Ma'am, I'm from SOE for Girls, Abul Khurana, District Sri Muktasar Sahib. In Punjab? Yes, ma'am. Wow. Were you able to prepare the drink along with us? Yes, ma'am. Easy? Yes, ma'am. It was very tasty and very healthy for us. Yeah? And it was very easy. Sure. Vibha has a question for you. Has anyone ever tasted this gum before? Before today? Did anyone have this beforehand? It's a Ma'am, I very had tasted it before. You had? perfect. That's very good. And it's very nice to hear that. Though, as I said, you must have already tasted it in ice creams and everything. But to actually have a drink made out of it is something that is getting lost. So it's always a good idea to revive our traditional drinks because they are suited for this kind of an environment. Perfect. And because it's so hot here, Definitely. and we should have things that help us retain water in our bodies so we don't get dehydrated and we do not suffer a heat stroke. Yeah. And they're definitely far better than the other drinks we get in the market, which are Exactly. ready made and the packaged food and stuff. And you can make it so easily. I see everyone could make it in just 10 minutes at home. So summer holidays, what do? Once in a while, you make this drink for yourself. Rajneesh? Hi, Rajneesh. We can see you with your drink. Rajneesh and Neha, please unmute yourself and tell us how's your experience. रजनीश और नेहा आप लोग अपना आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और एक बार हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा
लगा हमारा ड्रिंक? नहीं? मैम हमें आपका ड्रिंक बहुत अच्छा लगा, जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आसानी से मिल गया आपको गोंद कतीरा? यस मैम। आपको अदरवाइज क्या पीना पसंद है ड्यूरिंग समर्स? लेमन जूस। लेमन जूस। ओके, दैट इज वेरी हेल्दी ऑल्सो, वो भी अच्छा है। पर कभी कभी वैरायटी अच्छी रहती है, तो हम वैरायटी के लिए कभी कभी गोंद कतीरे का शरबत पियेंगे। यस मैम। यस मैम। ये राजेश, देखिए अच्छा बनाएगा। बलजिंदर, बलजिंदर ग्रोवर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और एक बार हमें बताइए कि आपका एक्साइटिंग ब्यूटीफुल पिंक समर ड्रिंक कैसा लग रहा है? हाय बलजिंदर, आप कौन से क्लास में हो? मैम 5th C। वाओ, 5th स्टैंडर्ड। कहाँ से? कौन सा स्कूल है? केंद्र विद्यालय। आई एम श्योर बलजिंदर आपकी फैमिली भी ये ड्रिंक बहुत एंजॉय करेगी। आपने ये ड्रिंक पहले पिया है? आई थिंक बलजिंदर से हमारा ऑडियो कनेक्शन टूट गया है। चलिए कोई नहीं, सब आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं। आप बिना बात पे उनको अपनी ड्रिंक से दूर रख रही हैं। I'm so sorry, Viva. और कुछ नहीं I हुआ think है। I should not be a barrier between their tempting drink. और सबसे अच्छी बात है ये हेल्दी है। Yeah, definitely. तो ये नहीं है कि हम इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चीनी डाली हुई हो। Oh, right. हमने That's इसके very अंदर दूध important. डाला है, जो बहुत जरूरी है बढ़ते बच्चों के लिए, हम्म। क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन डी होता है जो बहुत अच्छा है हड्डियों के लिए। और इस तरीके से बच्चे जिनको दूध बहुत ज्यादा पसंद नहीं है वो भी दूध जरूर पिएंगे। परफेक्ट, अच्छी बात है, इसीलिए हमने बनाया है। और ये जो आप, ये एक बहुत अच्छा, बनाने में भी बहुत मजा आया होगा आप लोगों ने जब बनाया होगा, कि किस तरीके से आपने एक छोटा सा टुकड़ा डाला गोंद का और वो बढ़ के इतना सारा हो गया। तो उसमें एक गेम होती है, खाने को एंजॉय करने के लिए बहुत मजा आता है इस तरह से खाना बनाने का। कि एक्सपेरिमेंट, जैसे आप अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि हमने ये डाला, ये बन के निकल आया, हमने ये डाला था, अरे इतनी अच्छी चीज खाने के लिए हमें मिल गई। राइट। अरे तो ये तो एकदम जादू है। तो और ये खाना बनाना सबको आना चाहिए, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए, मम्मी पापा ना हो घर पे, कोई भी ना हो घर पे खाना बनाने के लिए, तो क्या करें उस टाइम पे। एग्जैक्टली। आई एम श्योर हमारे बच्चों ने अपने आप में एक जूनियर शेफ ढूंढा होगा आज, एंड दे वुड बी वेरी डिलाइटेड टू डेवलप दिस स्किल टुडे। उन्हें भी पता चला होगा कि in spite of being howsoever young and little they are, they can come up with some really tasty stuff. तो अब हम नेक्स्ट वाली चीज बनाते हैं। Should we? अपना नेक्स्ट सैलेड बनाएंगे, जो हम अपने एक मिलेट से बना रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं और अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स लेके आ रहे हैं इधर। तब तक आप लोग भी सारा अपना अरेंजमेंट करिए कि सारा सामान इधर आ जाए। तो अब हम क्या बना रहे हैं? सबका सामान तैयार है? एवरीवन इज रेडी? Everyone is ready with their ingredients. Now let's start. Somebody is asking they hate capsicum, so can we skip it? Yes. अच्छा, अभी हमें किसी ने बताया कि उनको कैप्सिकम अच्छा नहीं लगता, तो आप मत डालिए। ये अपने मर्जी से है, खाना खुद बनाएंगे तो आप जो चाहे डालिए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ कुकिंग योरसेल्फ, कि नहीं पसंद नहीं डालेंगे, जो पसंद है वो और ज्यादा डाल लेंगे, और बस ये देखना है कि टेस्ट ठीक रहे। तो अब हम इसके पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, और अगर हम फिर से वापस वो उस पे चले जाएं अपनी प्रेजेंटेशन पे, तो हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या डाला है।
सबसे पहले तो हमने इसके अंदर एक बाजरा डाला है। बाजरा आप सबने देखा होगा, क्योंकि अरे सॉरी, बाजरा नहीं, सॉरी, ज्वार डाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्वार डाला है हमने इसके अंदर। ज्वार सबसे बड़ा मिलेट होता है। मिलेट के इन इंडिया वी हैव अराउंड 9 टाइप्स ऑफ मिलेट दैट आर बीइंग प्रमोटेड। 9 तरह के मिलेट काफी आराम से आजकल मिल रहे हैं हमें, जिसमें से जो हमारा ज्वार है सबसे बड़ा दाना होता है। मिलेट्स क्या होते हैं, जैसे वी हैव राइस एंड व्हीट, उससे थोड़ा छोटा दाना जो होता है वो हमारा मिलेट कहलाता है। तो मिलेट में हमने इसको ज्वार लिया है। ज्वार सारे छोटे वाले में सबसे बड़ा है, तो इसलिए हमने उसको लिया। देखने में अच्छा लगता है, उसको उबालना भी बहुत इजी रहता है, और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये बहुत क्लाइमेट रेजिलिएंट होता है। आजकल आप लोग सब सुन रहे होंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। दिस क्लाइमेट चेंज के कारण there are many things that will not be available in future. It's very difficult to grow them. उनके लिए, क्योंकि हर पौधे को उगाने के लिए आपको पानी चाहिए होता है, अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो many things cannot grow. However, क्योंकि मिलेट्स एक जंगली घास फूस की तरह भी उग जाते थे पहले से, तो ये आराम से बढ़ती गर्मी में भी उगते रहते हैं। तो हमने इसके अंदर ज्वार यूज किया हुआ है। एक तरह का मिलेट है जो उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि फाइबर भी होता है बहुत सारा, तो इट कीप्स यू फुल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। और इसके अंदर हमने जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो डाले हैं। हमने डाला है इसके अंदर मैंगो डाला हुआ है, कच्चा आम, पक्का आम, और साथ में उसके अंदर हमने थोड़ा सा पपीता डाला है, कच्चा पपीता। अब हमने ये सब कुछ क्यों डाला है, हमने शिमला मिर्च भी डाली है, लाल वाली डाली है। जिनको शिमला मिर्च पसंद नहीं है, प्लीज डू ट्राई अदर टाइप्स ऑफ बेल पेपर्स, क्योंकि वो वाले जो बेल पेपर होते हैं उतने बिटर नहीं लगते हैं कई लोगों को, जैसे हरा वाला नहीं अच्छा लगता है। तो उसकी जगह आप लाल या पीला वाला कर खा के देखिए, वो दे आर माइल्डर इन टेस्ट। सो we have put all this. Along with this we will make a we will be making a dressing with a lot of ingredients such as olive oil and lemon juice, and we will be using chili and salt in it. ये तो नॉर्मल खाने हैं, तो अच्छे ही रहते हैं, ये सबके घर में मिल भी जाते हैं। और हमने इसके अंदर थोड़ा सा हनी भी डाला है उसके थोड़ा मिठास के लिए। तो अब कैन वी गेट बैक टू द वीडियो? यस, वी आर ऑलरेडी बैक ऑन द वीडियो। तो मैं आपको पहले तो ज्वार दिखा रही हूँ। आपने ज्वार देखा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बनाया है, आपने उबाला है। सो यू हैव seen this jar. The grain is quite big, and this is what it looks like after boiling. So what are we doing? We are putting one half of this into our bowl because we are not making too much. हमने डाल दिया इसके अंदर, लगभग इसका आधा डाल दिया। ठीक है। अब क्योंकि हमें इसको, इसके अंदर बहुत सिंपल है, सब कुछ सिर्फ डालना है। कटा हुआ होगा तो आराम से मिल भी जाएगा। ये हमारा पका आम है, दिस इज आवर राइप मैंगो विच वी आर गोइंग टू पुट ऑन दिस नाउ। सी दैट द मैंगो इज नॉट टू राइप because then it will stick, make everything very sticky. So उसके बाद हमने ये डाला है कच्चा आम, this is raw mango, and we have put this also in this, and this is raw papaya. Raw papaya is very good for health. It has papain, which is an enzyme which is good for your stomach. So it breaks down proteins. It's all works as an antimicrobial also. So that's very good. जो हमने ये अभी mangoes डाले थे, raw mango and the ripe mango, it has lots of carotenoids and it has a lot of antioxidants in it, which are good for health again. Yellow fruits have generally have carotenoids which lead to the production of vitamin A. तो ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। रंग बिरंगे खाने खाइए, कहते हैं कि your food should have a rainbow on it. So we have tried to have a rainbow. So that's why the red bell pepper, हमने इसके अंदर ये भी डाल दिया। अब हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है, फिर इसके ऊपर हम इसकी ड्रेसिंग डालते हैं।
अब ड्रेसिंग कैसे बनानी है? अब ड्रेसिंग बनाने के लिए हमने एक कटोरी ली, सॉरी, उसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच। आप लोगों ने होपफुली पहले से बना के रखी होगी। फिर हमने उसके अंदर डाला 2 चम्मच नींबू, फिर थोड़ा सा हमने डाला हनी। हनी देखिए इसके अंदर फ्रूट्स हैं, यू ऑलरेडी हैव स्वीट फ्रूट्स, डोंट हैव टू एक्चुअली पुट हनी, बट इट ऑलवेज गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट, सो व्हाई नॉट। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है एंड थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू लाइक salt and how much you like sugar, sorry, chili. ज्यादा चिली डालेंगे तो चटपटा ज्यादा बनेगा, आप अपनी इच्छा से बनाइए। आई थिंक इसके अंदर हमें थोड़ी सी जरूरत है लेमन जूस की, और तो हम इसके अंदर और लेमन जूस डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा इसको। हमने लेमन जूस और डाल लिया, एकदम चाट की तरह स्मेल आ रही है, इधर खुशबू बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है। और अब हम इसके ऊपर इसे ड्रिजल करेंगे अच्छी तरह से, और इसको हम फिर से मिलाएंगे। अब ये क्यों हमारे लिए अच्छी रेसिपी है? बिकॉज इट हैज ग्रेन, जो हमारे ज्वार से आया। तो आपका पूरा खाना हो गया, इसके अंदर सब्जी भी है, शिमला मिर्च और पपीता, और इसके अंदर फ्रूट्स भी हैं। तो अब क्या चाहिए हमें? बस इसको फ्रिज में बना के रखिए, मतलब कि बनाइए, फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा करिए और बस खा लीजिए। अब ये अगेन हम अपनी अनुभूति को ही टेस्ट कराएंगे। तो पहले तो मैं ही टेस्ट करके देख लेती हूँ कि नमक मिर्च ठीक है। इसमें आप अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हैं। I'm back. I heard परफेक्ट। and smelled a very interesting recipe, and I'm tempted to have it. तो अनुभूति आपको कटोरी में दें हम, या 1 चम्मच Sure. में दे दें? Sure. सो देखिए, ग्रेन्स ऑफ ज्वार लुक सो प्रिटी, एकदम ऐसे लग रहे हैं दे आर पर्ल्स सिटिंग इन कलरफुल Pearls of wisdom. pearls of wisdom, pearls of nutrition, pearls of health. Wow. So This seems like a really nice and a very tempting recipe. It smells also so good and seems so nutritious. It's actually very good. I am so happy that you like it, and Baba, I'm really lucky. I'm so glad we hosted the summer camp, and I'm so excited to have all of you guys even tomorrow. so once again, let us see who made what and what problems did they face, and what else do they want to know to make this better. Yeah. बताइए, अपने क्वेश्चन बताइए, सबका बिल्कुल ठीक बना क्या? Please put your questions in the chat box. Nevada, we can see you preparing the dish along with us. Nevada, we are not able to hear you. Your audio has some issue, which you can easily rectify. Yeah. मैम इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम, इसमें वेजिटेबल फ्रूट्स इतने हेल्थी था मैम। मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया मैम, इतना अच्छा लगा मेरे को, मैंने लगा मॉर्निंग मॉर्निंग में यही खाऊं करके मैम। That is the way to go. अब खुद बनाओगे? यस मैम। बनाना मुश्किल मैम ही नहीं। बहुत टेस्टी था मैम, जो भी हमको घर में है वो सब आइटम मैंने कोई दुकान से मैंने कुछ नहीं खरीदा मैम, मेरे घर में ही मिल गया था इजी से। ओके, आपके घर में ज्वार खाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, रेगुलरली ज्वार खाना चाहिए। एक तो ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, और उससे भी ज्यादा अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मिलेट्स खाइए जितने तरह तरह के, अलग अलग तरीके से। और किसी को Yes, पता है? नेवादा, आप कहाँ से हैं? मैम मैं बेंगलुरु से हूँ मैम। Wow, it's so wonderful to see you. थैंक यू मैम। कौन सी क्लास में? मैम 8th है मैम। 8th A. Wow. यस मैम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। I think इन्होंने थोड़ा सा another interesting glimpse of the recipe. गगनदीप, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और एक बार हमें बताइए कि आपने
कैसे बनाई है ये रेसिपी और आपको कैसा लगा? हाय गगनदीप, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। कहाँ पे हैं? मैम पटियाला। पटियाला। ओ वंडरफुल। आपको रेसिपी इजीली समझ आ गई? हाँ जी मैम। बना ली आराम से? यस मैम। कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी है ये। अच्छी है ये? जी क्या क्या डाला इसमें? मैम, रॉ मैंगो, हम्म। पक्का मैम, पपीता कच्चा, विच ऑफ हरी दीज इज फेवरेट इंग्रेडिएंट? इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? मैम, मैंगो। मैंगो। आजकल गर्मियों का मौसम है, मैंगो इतने तरीके तरीके के No मिल रहे doubt हैं, about किसी it. को भी दिल यही करेगा। पर खाली पपीता क्यों खाया जाए, उसके अंदर और भी चीजें डाल के खा सकते हैं। Who else? We have a lot of hands raised. Wow, this looks wow. beautiful. This looks fantastic. Manisha Verma, please unmute yourself and tell us your story. Hi, Manisha. Yes ma'am. Great to have you once again. So, how did you find the salad? Please tell us your salad story. मैम, सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे मिल गए थे, तो बस मैंने उनको कट किया एंड जैसे जैसे मैम ने बताया वैसे वैसे मैंने उसको मिक्स किया। आप कौन से क्लास में है मनीषा? मैम 10th। Oh, you're in 10. Wow, that's fantastic. तो अब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुकिंग कर लेते हैं आप? मैम सारी कर लेती हूँ मैं। अच्छा, तभी इनके साथ चक्कू भी रखा हुआ था। I see. So I would suggest the younger kids don't try to cut it yourself. Yeah, But older kids can obviously cut. She Hmm. has shown that. that's great. We can also see that kids right from a very young age to a senior class can also follow this recipe, which is very easy to make. This also And looks nice. we have Sophia with us. Sophia, we can see your wonderful recipe. The grains of jowar look fantastic. Sophia, please, Yes ma'am. please tell us where are you from, which class, which school, and tell us your salad story. Ma'am, myself Sophie Chaudhary. I study in 11th class with PCB science, and I'm from UP Bagpat. Oh, wonderful. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, I like to eat jowar very much. And raw mango and white mango is my favorite fruit. Okay. So I cut it and follow ma'am's recipe to make it. And I loved it. I tasted with my mother. My mother said this is very tasty recipe. That is good. And my mother also said this क्यों जब ये सुबह नाश्ते में देनी चाहिए. Sorry? And ma'am, my mother said this he needs it daily in breakfast Oh, lovely. and drink also. Wow, that's fantastic to hear. I think Vibha has taught us a lot today. So it's a life skill. Everyone should know how to cook. जिंदगी में कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है खाना बनाने की, तो अपने लिए खाना बनाना चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हेल्दी खाना हम तभी खा सकते हैं जब हम खुद बनाएं। Right. तो हमें आना चाहिए। हमारे पास इतने सारे hands raised हैं. Let us take some more reactions. Let us hear what children have to say. I think this session is becoming interesting by every minute. Jignasa, hi Jignasa, how are you? Please unmute yourself and you would. Hi. Ma'am, it is tasty. It's tasty. You liked it? Yes, ma'am. Which of these is an ingredient which you don't really like much? कौन सा कम पसंद है इनमें से? Ma'am, raw mango. Raw mango उतना नहीं अच्छा लगता. नहीं. Okay. And why is that so? Too tangy? Yes. Okay. So the thing is कि थोड़ा सा डाल के इसमें डाल के टेस्ट करके देखेंगे तो मिक्स एंड मैच में अच्छा हो जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है, you can put a little bit of it. As I said, you can mix and match. Yeah.
Did you also know that ज्वार is so healthy and nutritious for you and इससे हम interesting salads बना सकते हैं? Yes, ma'am. You did? तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम कोई और मिलेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो भी मिलेट हो हमारे हाथ में, हम उसको यूज करके इसको बना सकते हैं। मैंने बड़ा वाला इसलिए लिया क्योंकि मुझे दिखाना था, पर बहुत छोटे छोटे भी मिलेट्स होते हैं जो आप आराम से यूज किए कर सकते हैं। विभा, हमें थोड़ा और मिलेट्स के बारे में बताइए, लाइक और किस किस टाइप के मिलेट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम ज्वार, जो बच्चे इजीली अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या वो क्यों बाकी अनाज वगैरह से बेटर है? तो देखो, जिस तरह से हमारा चावल है, गेहूं है, उसी तरह से ये भी एक ग्रास फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आजकल पिछले साल आपने देखा होगा, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया तरह तरह के मिलेट्स को। तो ये मिलेट्स जो होते हैं वो क्यों प्रमोट कर रहे थे? क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं तो इनको पानी की उतनी जरूरत नहीं होती उगाने में। ये गर्मी में भी उग जाती है, खराब सी अगर जमीन हो उसमें भी उग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी 9 तरह के मिलेट्स को प्रमोट किया। उसमें कुछ तो बड़े पॉपुलर हैं, जैसे ज्वार बाजरा है। तो ये तो बड़ा आराम से मिल जाता था, पहले भी लोग खाते ही रहते थे ज्वार और बाजरा। बाजरा आपने देखा होगा, बहुत चिड़ियों को भी खिलाया जाता है। आप कहीं किनारे पे जाओ तो कबूतरों को खिलाने के लिए बाजरा भी आपको चिड़ियों को खिलाने के लिए दिख जाएगा। अदर देन दैट, कुछ ऐसे मिलेट्स होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, जो यहाँ से पीपल हु आर फ्रॉम द साउथ, they must be using ragi a lot. That's also a millet. तो रागी थोड़ा सा राउंड सा ब्लैक कलर का मिलेट होता है, which again grows very easily in less water and is available, is a climate resilient crop. उसके ये 3 हमारे बड़े बड़े वाले मिलेट्स हैं। उसके अलावा हमारे 5 ऐसे मिलेट हैं तो दो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसमें एक कुटकी होता है जो जिसको लिटिल मिलेट ही कहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा छोटा होता है, और कि माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कहेंगे, बड़ा छोटे छोटे दाने रहे होते हैं उसके। अदर देन दैट, आप लोगों ने सुना होगा कुटकी होता है और कोडो होता है। इस तरह के काफी सारे मिलेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किए। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। और दुनिया में और कहाँ कहाँ मिलेट्स खाए जाते हैं विभा, कोई आइडिया है? या हमारे यहाँ पे ही वो इतने पॉपुलर है, पर आजकल बहुत कम लोग उसे नहीं खाते हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सो थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए कि उसकी कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है। तो ये जो मिलेट्स हैं सिर्फ इंडिया में नहीं होते, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, उसमें काफी पॉपुलर है। जैसे आपने टेफ कभी खाया होगा, तो इथियोपियन खाने में टेफ का बहुत इस्तेमाल होता है। उसका डोसा जैसा बनाया जाता है फर्मेंट करके। तो एक वो होता है, नहीं तो किनुआ तो नहीं है मिलेट, बट इस तरह से अफ्रीका में तो है ही, साउथ अमेरिका में भी काफी सारे मिलेट्स हैं जिसका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट है। ऑलराइट, आई एम प्रीटी श्योर इनफैक्ट साउथ इंडिया में मिलेट्स काफी पॉपुलर है। जैसे मैंने कहा, रागी फास्ट के टाइम पे काफी खाए जाते हैं, या रागी फास्ट के टाइम का नहीं है। रागी जनरली साउथ में खाने में ही उसके मुद्दे बना के उसको उबाल के उसके आटे को उससे खाना बनाया जाता है। अगेन बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा इसके अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम काफी होता है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और जैसे आप फास्ट के बारे में बता रही थी, तो वो समा का चावल होता है। तो वो समा का चावल जो होता है उसको मुझे याद है हमारे यहाँ बचपन में मैंने देखा है काफी लेडीज समा चावल व्रत के समय खाती है। व्रत के चावल की तरह वो बिकता है, वो समा का चावल होता है, वो भी मिलेट है। तो ये सारे जो है ग्रास फैमिली के ही होते हैं, घास है, घास के बीज हैं एक तरीके से। पर वही जिस तरह से हमारा गेहूं और चावल है, उसी तरह से घास की फैमिली थोड़े अननोन है। पुराने जमाने में इंडिया में तो मिलेट्स ही खाते थे, ज्यादातर काफी खाए जाते थे। तो अभी क्यों मिलेट्स का दौर वापस आ रहा है? व्हाई इज इट दैट मिलेट्स आर गेटिंग सो पॉपुलर अगेन? क्योंकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। इतना धीरे धीरे टेम्परेचर ग्लोबल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चीजें उगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब क्या करेंगे उसमें आगे जाके, हम किस तरह से क्या खाएंगे, तो वो देखने के लिए हमारे को
we need to have alternate crops, Okay. which we can depend on, which can easily grow at in different kind of environments also. Yeah, I've heard that rice is a water guzzler crop and it also emits a lot of methane and stuff like that. So compared to that, do millets are environment friendly? Yes. So they don't need that much water, Okay. and they are good for the environment. Oh, that's fantastic. So millets, so that's why I'm sure you guys have an idea why millets are becoming so popular and why the government is promoting it. Given the fact that there's scorching heat outside, just as we suffer because of this heat, plants also suffer. And their productivity also goes down when the temperatures rise a lot. Right now in Delhi, where I and Vibha are hosting the summer camp from, the temperatures have hit as much as 50 degrees on a certain day. So, ab aap sochiye, just give it a thought that in such bad weather, if we suffer, and how do plants manage? So that's why, as the times are changing, we need to look for more crops so that our food security is taken care of. And that's the reason why we have looked for a recipe which is based on millets. But before we stop talking about millets, let me speak to Mohit Kumar. Mohit, we see a lot of your friends around you preparing the recipe, and I'm really excited to speak to all of you. आप प्लीज बताइए आप कहाँ से हैं, आपकी कौन सी आप क्या क्लास? बता रहे हैं? Hi everyone. म्यूट करो। Hello ma'am. How are you? हेलो नमस्ते हेलो मैम. मैम, आप लोग गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून. आप लोग कहाँ से हैं? कौन से? HP सुंदरनगर दशहरा से मैम। शिमला से? नहीं, सुंदरनगर मंडी से मैम। सुंदरनगर मंडी. ओह वंडरफुल. सुंदर मंडी तो और इतनी अच्छी जगह है. आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमें थोड़ा बताइए. इतने सारे बच्चों के साथ में कुकलॉन्ग सेशन कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो जो ड्रिंकिंग सेशन था वो प्रॉपरली हमें सामान ना मिल पाया, वो हमने नहीं बनाया, लेकिन सैलेड का बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चे ओके. तैयार भी कर रहे हैं, हमने प्रिपेयर कर दिया मैम। ऐसा क्या आपने कुछ पहले कभी किया है? क्या आप लोग कभी कुकिंग से रिलेटेड कोई सेशन स्कूल्स में यूजुअली होते नहीं है, तो वाज इट हाँ अ जी न्यू मैम, ऑल ऑफ फर्स्ट यू? टाइम। और बहुत ही अच्छा मैम, मैं और बच्चे दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, और बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया है। ओह दैट्स वंडरफुल. खाने में कैसा लगा? हमारी विभा जी पूछ रही है में कैसा नहीं लगा? कर पाए। आप सब कौन सी क्लास के हैं, थोड़ा हमें ये भी बताइए. हमारे 10th ऑनवर्ड मैम, 10th +1 और 2। ओह वाओ, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. हरा क्या है? आई थिंक ये आपने कोई दूसरा सैलेड तैयार किया है, इज इट? नहीं करो हमें इसके बारे में कुछ बताइए. ये आपने क्या प्रिपेयर किया है? मैम, हमें ज्वार मिल ना पाया, इसलिए हमने स्प्राउट्स लिए हैं। अच्छा. इसमें हमने चने को ऐड किया है, और जो मैंगो था वो भी थोड़ा सा ज्यादा राइट हो गया था, इस कारण से वो दिया मैंने, ऐसे ऐड सब कुछ किया था। अच्छा. तो इससे ही पता चलता है कि जो भी हो हमारे पास, हम बड़े आराम से उसका सैलेड बना सकते हैं. हाँ, इन्होंने definitely. स्प्राउट यूज Yes, किया है, हाँ. आप कुछ भी जी मैम, इसमें स्प्राउट्स यूज किए हुए हैं, इससे ज्वार हमें अवेलेबल नहीं हो पाया, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पर अच्छा. कच्चा पक्का मैंगो और थोड़ा पपाया कम रहा इसमें। और अच्छा. टमाटर डाले हुए हैं, अनियन डाला हुआ है, और मिंट है, और कोरिएंडर है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है मैम। अब हम नेक्स्ट में स्कूल में हाउस कंपटीशन करवाऊंगी, उसमें ज्वार और मिलेट्स हम यूज करेंगे मैम। Oh, that's fantastic, ma'am. I think this is very rewarding to hear. जो पहाड़ है वहां पे भी बड़े आराम से रागी वगैरह मिलता है. अच्छा. तो पहाड़ी इलाके में भी मडुआ खाया जाता है, तो वहाँ
उसको भी आप रिप्लेस करके उससे भी बना सकते हैं। क्या चीज होती है यस मुगा? मैम। अच्छा, रागी यस। को ही मुगा कहा जाता है। ओके मैम। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। I see a lot of hands raised, and I'm really delighted to see that all of you have been able to participate in our Cookalong session. This is the first time that we have hosted, and it feels great that all of you have been able to keep up with us. But let us speak a little more about the dishes. Let us speak a little more about food and environment, because this is a very critical topic. Why we chose to do a session on food is because food is something which affects all of us. It is something which goes inside us, which makes us. So, Vibha, please tell us your comments on why you choose a recipe. I mean, you could have, uh, easily asked kids to get some packaged stuff from outside, maybe something using chips or something using some easily available drink that is outside, and we could have refurbished it or done something like that. But why do something using raw fruits? Why you do something using raw papaya or a lesser known ingredient like gond katira? So all What's these the motivation behind this? all these ingredients are fresh. They are rich in micronutrients. They are more healthy for us. The packaged food that we get in the market has is stored. It's cooked and stored for a very long time. उसके nutrients कम हो जाते हैं. उसको बनाने के लिए बहुत सारा salt use किया जाता है, बहुत सारे preservative use किए जाते हैं. उसको घी तेल उसमें ज्यादा होता है, हाई सॉल्ट शुगर फैट होता है उनके अंदर, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है. तो इसलिए हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करें. जैसे इसमें मैं आपको बता सकी कि भाई हनी डाल रहे हैं तो इसके अंदर उसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर, या उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, या हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं तो उसके अंदर ये है. पपीते में पपेन है जो हमारे स्टमक के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. तो हर चीज जो भी हमने डाली है न्यूट्रिशियस डाली है, सबसे परफेक्ट हमारी बॉडी को बेनिफिट दे. वो जो जो गोंद कतीरा है लोग जानते ही नहीं है उसके बारे में, तो पर उसके हेल्थ बेनिफिट से गर्मियां इतनी आ रही है, आप आगे क्या करेंगे, आप उसको पी के निकल जाए घर से तो गर्मी का इफेक्ट जो है उतना बुरा नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपके बॉडी में थोड़ा बहुत वाटर वो हमेशा रिटेन करेगा. तो हीट स्ट्रोक होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी. हीट स्ट्रोक तभी होता है जब आपके बॉडी में कोई पानी वाली चीज ही ना बचे, सब पानी उड़ गया हो आपका बॉडी में से, स्वेट कर ही ना पा रहे हो तो आप बेहोश हो जाओगे. तो दैट इज व्हाई गोंद कतीरा इज वेरी गुड फॉर दोस काइंड्स ऑफ वेदर. तो जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही है, एज climate is changing, we have to keep on modifying our diet. In a way we will have to modify our diet to ensure that we can survive. Right. So these are survival foods which our ancestors already knew about, पर उसके बारे में हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं. जैसे ज्वार बाजरा के बारे में लोग पहले भी बनाते थे पर धीरे धीरे भूल गए, उसी तरह गोंद कतीरा लोग नहीं खा रहे हैं. अब थोड़ा बहुत जानेंगे तो लोग खाएंगे. तो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, तो दे आर ऑल गुड फॉर हेल्थ. Yeah, and because this is a salad, even those who do not always like a bajra roti or a jwar roti or a millet roti can use the cereals right away and make a fantastic salad out of it. So, people, I'm sure you all have your salad bowl ready and you all have a drink with you, and you are able to make your summers more interesting, tastier, fresher, richer, and enjoyable. Right? सबका लंच तैयार है. सबका लंच तैयार है. अब सबको बस खाना है. That's fantastic. So let me take now some comments from all of you. I would thank Vibha. Thank you. Thank you so much, Vibha. This looks fantastic. But before you go, would you like to talk about your food book? Okay. So Center for Sciences and Environment has published 4 books like this, which are on survival foods, which are climate resilient foods. So this is the last volume of the book, which we published last year. And it has many recipes which are easy to make, are healthy, and would help us survive a climate risk world. Wow. Thank you so much. So we have a recipe book also for those
who would like to have it can order it from our CSE store. Thanks a lot, Vibha. Okay, people, I'm sure you enjoyed the Cookalong session today. Now, let us have a short, quick giggle-miggle session. Here we will just interact and see how is it going with you, right? Harleen Kaur. Hi, Harleen, how are you? Good morning, ma'am. Good morning. I think it's good afternoon. So where are you from? Ma'am, I am from Kharad, Punjab, 8th A class. Very Oh, good that's evening. fantastic. So, Harleen, how is the session going on? Are you able to enjoy? Are you able to keep up with the steps and instructions that we have given? Yes, ma'am, I'm very excited. Yeah. And Were you able to make the recipe? ma'am, actually, I am late to join the video, so I miss recipe. Oh. Sorry, No, ma'am. no problem, Harleen. But I hope you know that we have prizes for those who are attending our session and who have their videos on. Yeah. So make sure that Yes, ma'am. give others a tough fight about it. Yes, ma'am. मैम Okay. एक्चुअली मैम ड्रिंक अगर समर में ड्रिंक तो मैम घर पे एक्चुअली कॉफी मिल जाती है तो सारे एक्चुअली कोल्ड कॉफी बनाते हैं. अब अगली बार आप ये गोंद कतीरा का शरबत बनाना और सबको बताना कि आप भी कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. ओके मैम. मैम आई लव कुकिंग. You do? Oh, that's Yes, great. ma'am. That's great to hear. Which class are you from, Wesley? Yes. Ma'am, 8th class. Oh, I'm so sorry. Yeah, you told me. 8th class. Okay. So it's fantastic to see how kids of all age groups are able to follow our recipe. We have another interesting, excited candidate with us. This is Brigu Bharadwaj. Hi, Brigu. How are you? I see your hand raised. Which class are you from and where are you from? Ma'am, I'm from Greater Noida and I'm class 4. You're in class 4. Oh, fantastic. Which school? Ma'am, JPIS. Okay. Were you able to follow our recipes? मैम मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मैं उस रेसिपी बना नहीं पाया था गोंद कतीरा की. एंड जो आपने सैलेड बताया मेरे पास ज्वार एंड सडनली मेरे पास ज्वार एंड रॉ पपाया नहीं था. Okay. So no problem. I'm sure that you have heard Vibha very closely. Even if you have missed the session, for all those who have missed the session, please let me announce that you can watch its live streaming or its recorded session on our website itself. One of my team members will put the link on the chat strip and you can watch its complete session in detail. Vibha has also given alternatives for what else can you use if you don't have some of these ingredients. So make sure that you make your recipe and you share it with your friends and family. We have Aarti. Hi, Aarti. How are you? Hello, ma'am. Yes, ma'am, I am fine. Which school? Which Ma'am, place? actually, I am from Kolkata, KV Oh. Fort William. Oh, lovely. You are in the KV Fort Williams. Wow, that's Yes, a very symbolic place. So, Aarti, did you enjoy the recipe? Actually, ma'am, I enjoyed a lot, and You I'm sorry that I won't be able to prepare this all things because I'm too far from the city and stores are far. That's why I won't be able to prepare the recipe. Oh, so you found the ingredients a little tough to procure? I think Gond Katira is easily available, no? Actually, ma'am, I am far from the city. That's why, ma'am. Oh, okay, okay. Do you like? But, ma'am, I have noted each and everything and will try it later on. Sure. Do you like millets? Are you fond of millets? No? You do? Yes, ma'am. Okay. Thanks, Aarti. It was nice Thank to you, hear. ma'am.
Okay, so here let us take a bite from this is Miss Kumar. मैम को दिखाना, मैम को दिखाना। अरे वो खुद अपने आप दिखेंगे। Hi Nitin, how are you? We wish to see your recipes. I think you have prepared some. नहीं कोई और ही है अभी। दिखाना। I think कोई और है। प्रेमवती मैम जैसे थोड़ी सी Oh, दिखेगी। Mansi. Hi Mansi, this looks something different. Tell us what are you doing? What is this recipe about? अभी मैम ने यस क्यों बोला था? तुमने यस पर Mansi, are you able to hear us? Please tell us where are you from? Which class are you in? Which school are you in? And what are you making? Hello, ma'am. Hi. Ma'am, good morning. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Sorry. Mansi, Yes, ma'am. we would like to see you. Your dish also looks very interesting, but we want to see you. I'm sure you are also very interesting. Okay, ma'am. Thank you. Hi Mansi. Mansi, where are you? कौन सी क्लास में हो? 7th. 7th स्टैंडर्ड. क्या बनाया आपने? Ma'am, salad. सैलेड बनाया. अच्छा लगा? Yes, ma'am. ये ज्वार वाला सैलेड है जो हमने बताया, और दिस इज समथिंग न्यू यू आर ट्राइंग? Ma'am, tomato. Ma'am, tomato and lamb. अच्छा. Chole. सॉरी? Ma'am, black chick and mango. ओके. आप कहाँ से Ma'am, बोल मुझे रहे हैं? पपाया नहीं मिला था। नो प्रॉब्लम. खत्म हो गया। आप कहाँ से हैं आरती? सॉरी मानसी. Ma'am, I'm from Pipalkhedi. पीपल Punjab. खेड़ी पंजाब से. ओके. Yes, ma'am. सो मानसी, जब भी आपको अगली बार ज्वार मिले, प्लीज ये सैलेड ट्राई करिए. आई एम श्योर आपको बहुत इजी लगेगा बनाने में और मजा भी बहुत आएगा. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. से पहले कभी कुकिंग की है? कुछ बनाया है कभी खाने पीने का? Yes, ma'am. यू हैव. ओके. Okay, ma'am. Thank you for joining us. Also join us tomorrow. Make Okay. sure that for tomorrow you also have all your ingredients ready. Do you guys know that tomorrow we have a nest making session? हाँ, तो जिनको नहीं पता है, let me announce once again that tomorrow we have a very exciting build along session where we are inviting a very important guest with us who will tell you how to make a nest using waste materials. एक चिड़िया का घोंसला बनाएंगे हम वेस्ट मटेरियल्स लेके. सारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स आपके डिजिटल किट में मेंशन है, जो आप हमारी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. उसका लिंक मेरे फ्रेंड्स आपको चैट स्ट्रिप में अभी दे देंगे. आपको यंग एनवायरमेंटलिस्ट वेबसाइट पे जाना है, डिजिटल किट डाउनलोड करना है, उसमें लिस्ट ऑफ मटेरियल्स देखना है. बहुत ही सिंपल मटेरियल्स है. सिजर है, एक रस्सी है, I think we also have some a plastic jar. उसकी लिड काट के लानी है, और एक आध इक्के दुक्की छोटी मोटी और चीजें हैं जिसको आपको तैयार रखना है. जिस तरीके से आज हमारा कुकलॉन्ग सेशन हुआ है, उसी तरीके से कल हमारा एक बिल्ड अलॉन्ग सेशन होगा, जहां पे आपको ऐसा पता चलेगा कि कैसे आप वेस्ट मटेरियल से भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि बर्ड्स को एक शेल्टर मिलेगा. So it will be another very exciting and interesting session for you. Make sure that you reach timely for our session. कल हम आपको विनर्स भी अनाउंस करने वाले हैं जूम इन स्टाइल कॉन्टेस्ट के, जो हमने थोड़ी देर पहले किया है. So I'm sure you would be very excited. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आपके अटेंडेंस के लिए हैं, और भी सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस हमारे पास आपको देने के लिए रखे हुए हैं. तो make sure that tomorrow at 11 a.m. you would be available. Okay. And did I tell you about my Goba Times magazine? No? Okay. So let me tell you a little bit about my Goba Times magazine. Otherwise, I will get really angry if you don't know what it is.
Okay. So we have a very interesting Goba Times magazine that we publish every month. You can find that magazine on our Young Environmentalist website. Make sure you go to this website. Oops. My friend will put a link to the Goba Times on the chat strip. Make sure that you check out its editions. We also have an edition on the millets, by the way. So make sure you go through it, read through it, and find the different kinds of millets that we have. And if you're interested, you can also write to me, and I will be really excited to publish your articles. This website is completely all you for you, and we have a lot of environment related stuff on it. We have cartoons, we have posters, we have videos, we have activity sheets, we have DIYs, we have the magazine, and my God, we have a lot of other games. So keep visiting the Young Environmentalist and stay tuned to our eCamp Extravaganza, because in a few minutes from now, we are going to host another contest for the day for you. So put your thinking cap on, because it is the time for a quiz contest, right? Recall all the facts and figures that you have related to environment, that you have related to a lot of other parts and topics of environment, current affairs, ye, wo, everything. Keep it everything ready, because we are going to host a quiz contest for you. This contest will also help you win prizes, which will be announced tomorrow. And there'll be certificates also for this. Okay. So I'm sure you are as excited for it as I am right now, right? Okay. So I will now invite my friend and colleague, Tushita Rawat. Tushita will be hosting the trivia for you. Hi everybody, my name is Tushita and I am your quiz master for the day. So how many of you are ready for the quiz? You've made some great recipes. Many of you put your Zoom backgrounds on. Some of you were not able to, but this is your chance for ultimate redemption because all of you can play this quiz. So who is ready? It's an online quiz. You don't have to put anything in the chat. And if anything, putting answers in the chat will have you disqualified from it. So don't put anything in the chat. It's an online quiz that each of you will attempt individually. So how many of you are ready? Can we see some hands raised up? All right. I can see many of you are ready. So the theme of the quiz today is, can anybody guess? Can anybody guess what the theme is going to be? And can we have some responses in the chat? I would request my friend to open the chat box so that we can see some responses. Environment, that's a good guess, but a little general. The hint is in the background. The hint for today's quiz is somewhere in the background. Millets, environment, biodiversity, recipe, summer, okay, drink, food, nest, beverages, current affairs. A lot of good guesses, but somebody guessed it correctly. Summers. Summers is the theme for today's quiz. So let's get started. I will tell you how you can join the quiz, but before that, I will share my screen. It's an online quiz, so each of you will join from your own devices, whether a phone or a laptop or a computer. You will join individually. Entering your name in the quiz is very important because otherwise we will not get to know who the winners are. Because Anubhuti just told us we have winners for this competition. You'll get prizes, you'll get certificates. We'll have those couriered to your address if you win the quiz, okay? And summers is the theme. So let's go to the quiz.
अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको मेरी क्विज वाली स्क्रीन दिखे, पर आपको जो सवाल है वो आपके फोन पे भी दिखेंगे और आपके लैपटॉप पे भी दिखेंगे। आप सबको क्विज वाली स्क्रीन दिख रही है? ओके ग्रेट। सो यहां से हमारी क्विज स्टार्ट होगी। आप सब अपने फोन्स में और अपने लैपटॉप्स में इस क्विज को लेंगे। हमारे पास 5 सवाल हैं समर से रिलेटेड। सारे सवाल किसी ना किसी तरह से समर थीम से रिलेटेड होंगे और एंड में हमें 3 विनर्स मिलेंगे। टॉप 3 विनर्स को हम प्राइजेस देंगे, बट उन विनर्स के नाम हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे, वो एक सस्पेंस है। विनर्स के नाम आपको कब पता चलेंगे? अनुभूति को ध्यान से सुना था ना सबने? कब पता चलेंगे विनर्स के नाम? कल, दैट्स राइट। तो विनर्स के नाम कल आएंगे। अब हम क्विज में आगे बढ़ते हैं। You can see the screen, right? No? All right. Here we go. Just a second, I will just figure out. So the instructions are on your screen. आप जिस भी डिवाइस से क्विज ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप गूगल की एक टैब खोलिए और उस पर www.menti.com टाइप कीजिए। जहां पे आप एड्रेस टाइप करते हैं जिसे URL बार कहते हैं, वहां पे आप www.menti.com टाइप कीजिए। वो आपसे कोड मांगेगा और कोड आपकी स्क्रीन पे है 56257979। So the way you can join this quiz is go to any URL bar of the browser you're using in your phone or your laptop, open Google Chrome or whichever browser you're using, type www.menti.com or simply menti.com. It will ask for a code. The code is right here on the Zoom screen, 56257979. Once you join the quiz, it will ask for your full name. I suggest you also add your school's name. There's a certain character limit, but don't worry about that. You enter your full name and your school's name. You can write your school's name in short. This way we will know who has won the quiz in the end if you write your name properly. If you do not enter your name properly, we will never get to know who the winners were. बहुत जरूरी है कि आप अपना नाम प्रॉपरली ऐड करें जब आपको क्विज नाम ऐड करने के लिए बोले। अपना पूरा नाम और हो सके तो अपने स्कूल का नाम भी। अभी मैं देख सकती हूँ कि लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बट हमारे पास कॉल में और भी लोग हैं, सो वी विल वेट फॉर सम टाइम। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी इन द कॉल टू जॉइन अस. My colleagues will put the link and the code again in the chat box. In the chat box, you can find how you can join the quiz. You have to type www.menti.com and enter the code that's given. हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आराम से ज्वाइन कीजिए, अपना नाम पूरा डालिए और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो बाकियों के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए. You want the code again? We'll just put it in the chat box. The code that you have to enter at www.menti.com is now in the chat box.
जितने ज्यादा लोग क्विज खेलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। क्योंकि मेंटी के बारे में एक बहुत खास बात यह है कि अगर आप जल्दी सही जवाब देंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है कि सारे सही जवाब देने वालों को इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे, जो जल्दी जवाब देगा उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सो यू हैव टू बी क्विक एंड करेक्ट। Only 83 players, but we have many more in the Zoom call. So please go to menti.com and enter the code that's there in the chat box. Students are also helping with the code. Very nice. Google Chrome या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पे जाइए, जहां पे एड्रेस टाइप करते हैं वहां पे menti.com टाइप कीजिए, MENTI, और एक कोड डालिए 8 डिजिट्स का जो चैट बॉक्स में है, 56257979। प्लेयर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट वी हैव टाइम, सो वी विल वेट फॉर यू। वी वोंट लीव विदाउट यू, डोंट वरी। अपना फुल नेम डालना बहुत जरूरी है क्विज में। अपना पूरा नाम डालिए, और हो सके तो अगर कैरेक्टर्स अलाउ करते हैं तो अपने स्कूल का नाम भी डालिए, हमें बहुत आसानी होगी विनर्स डिसाइड करने में। धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, वेरी नाइस, वी आर टचिंग 100, वी हैव एक्सीडेड दैट। Many of you are saying that you want to say something. Unfortunately, it's not possible for us to take in each and every response. We have limited time, but please do put whatever you want to say in the chat box. आप chat box में जो भी लिखेंगे, मैं या हमारी टीम में से कोई उसको जरूर पढ़ेगा। तो आपको जो भी बोलना है आप प्लीज chat box में लिख दीजिए। Any comment that you have, any suggestion, any questions, please put it in the chat box and we'll get back to you. और अगर आपने क्विज ज्वाइन कर ली है तो आप वहीं पे रहिए, उसको एग्जिट मत कीजिए। All right, I think we can start. Most of you have joined. So are you ready? The quiz is starting. Don't come on the Zoom screen now. Don't put anything in the chat box. Please remain on your Menti screen. आप Zoom screen पे अभी मत आइए, क्योंकि आपको सवाल अपनी Menti screen पे दिख जाएगा, और चैट बॉक्स में कोई जवाब नहीं देगा। अगर आप चैट बॉक्स में जवाब देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। All right, so here we go. First question in front of you. Which of the following countries experiences summer during December to February? दिसंबर से फरवरी के बीच में इनमें से कौन सी कंट्री समर एक्सपीरियंस करती है? किस कंट्री में गर्मियां होती हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, चाइना। यू हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। एक वो कंट्री जहां पे दिसंबर से फरवरी में गर्मियां होती हैं। Quickly respond. We only have 5 seconds left. 4, 3, 2, 1, and time's up. 50 of you have said Australia, and that is the correct answer. Wow, I'm impressed. Australia is in the southern hemisphere, and this is why summers there are from December to February. The rest of the countries are in the northern hemisphere, and that is why their summer cycle is different. 50 of you know that. Extremely impressive. Let's move on to the next question. All of you are back. We're playing with 107 players. Question number 2 will be on your screens. Millions of years ago, when all plants grew in their native places, which of these would you have still found growing in India? So talking about millions of years ago, something that you would have found then. Somebody posted the answer in the chat box for the first question. You may get disqualified, so don't do that again. Now for this question, you have to choose the correct answer. Was it yam bean, jackfruit or kathal, gum tragacanth or gond katira, which we used in the morning,
or kohlrabi, which is also called gaant gobi. Quickly choose the correct answer. We have 10 seconds left. बहुत साल पहले, millions of years ago, आपको कौन सी सब्जी मिलती अगर आप native place में आते तो? 37 of you said Gond Katira, probably because you used it this morning. Unfortunately, it is the wrong answer. The correct answer is jackfruit. सही जवाब है कटहल. कटहल बहुत साल पहले भी अपनी नेटिव जगह में होता, इंडिया में ही, और यही सही जवाब है. 40 of you have given the correct answer. Good job. Now let's move to the next question. Question number 3, somehow related to summer. This question will be on your screen in a bit. Ready? Okay. All 107 of you are there. If your internet connection goes away in the middle, don't worry. You can click on the link menti.com, enter the code, and join right back. Question number 3. What popular frozen treat was invented in the early 1900s and often enjoyed in summer? There's a popular frozen treat which was invented in 1900s. एक गर्मियों में खाई जाने वाली जमी हुई चीज जो 1900s में इन्वेंट हुई थी, उसका नाम आपको बताना है. स्नो कोन्स, आइसक्रीम, पॉप्सिकल या फ्रोजन योगर्ट. ये सारी ही चीजें मिलती हैं सर्दियों में, बट अर्ली 1900s में, 1900s की शुरुआत में क्या इन्वेंट हुआ था ये आपको बताना है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो ध्यान से जवाब दीजिएगा. जरूरी नहीं है इसका आंसर आइसक्रीम हो, कुछ और भी हो सकता है. आइसक्रीम सबकी पसंदीदा है, पर इसका सही जवाब आपको थोड़ा सोच के देना पड़ेगा. 44 of you have said ice cream. That's where I got you. It's the wrong answer. Ice cream is one of our favorite treats, but unfortunately, it was discovered much before the early 1900s. The correct answer is popsicle. And fun fact, it was discovered by an 11-year-old boy when he forgot his summer treat, which was water mixed with some flavored powder, out on the porch, and it froze. That's how popsicles were invented. And it became a summer treat eventually in the early 1900s. So popsicle is the correct answer. Kudos to the 27 participants who gave the correct answer. 27 लोग जिन्होंने पॉप्सिकल कहा है, बिल्कुल सही जवाब है. आइसक्रीम हमारी पसंदीदा है, बट अनफॉर्चुनेटली और पहले इन्वेंट हो गई थी. ये सही जवाब नहीं है. लेट्स मूव अहेड इन द क्विज. हमारे पास सारे स्कोर्स आ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि कौन लीडर बोर्ड पे है, बट वो अभी सस्पेंस है आपके लिए. अब चौथे क्वेश्चन की बारी है. हमारे प्लेयर्स बढ़ गए. वाओ, वी आर प्लेइंग विद 113 स्टूडेंट्स. चौथा सवाल, व्हाट इज द टर्म फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड हॉट वेदर इन समर? गर्मियों में एक लंबा गर्म तापमान वाला समय, उसको क्या कहेंगे हम? थंडरस्टॉर्म, सोलर रेडिएशन, हीट वेव या ह्यूमिडिटी? आपको इन चारों में से एक सही जवाब चूज करना है. हमारे पास अभी समय है, 20 सेकंड है लगभग हमारे पास, तो आप सोच के समय दीजिए. बट जिन्होंने जल्दी जवाब दिया है और सही जवाब दिया है, उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं. 5 seconds left. 4, 3, 2, 1, and time is up for question 4. The correct answer is heat wave, and most of you know the correct answer. Very nice. 85 of you have given the correct answer, which is heat wave. It's another term for a period of extended hot weather, and we are experiencing heat waves in northern part of the country a lot these days. Those of you who have joined us from the northern part would understand. So heat wave, correct answer. Good job. Let's move on to question 5. When are the national parks? Just a second.
All right, we're at question 5 now. You have to answer fast to get more points. Why do landfills catch fire in summer? We have long options here, so you'll have to read it a bit. Landfills जहाँ पे हम कूड़ा डालते हैं, जो scientific structures होते हैं, वहां पे गर्मियों में आग क्यों लग जाती है, आपको ये बताना है. So पहला रीजन है कि ऑक्सीजन वहां पे एमिट होती है, दूसरा है मीथेन एमिट होती है, तीसरा है वहां पे कार्बन रिच लीचेट होता है, और चौथा है फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स. The correct answer is वहां पे मीथेन एमिट होती है. और उसके बाद हमारा ये जो आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन आर द नेशनल पार्क्स इन इंडिया यूजुअली क्लोज्ड, उसका सही जवाब है जून टू सितंबर. जून टू सितंबर आप में से 41 लोगों ने जवाब दिया है, जो कि सही है. मेजॉरिटी को सारे सही जवाब पता थे, जो बहुत ही अच्छी बात है. सो वी हैव एन इंटेलिजेंट बंच ऑफ स्टूडेंट्स हियर. यूजुअली जून टू सितंबर में ब्रीडिंग सीजन होता है, और पार्क्स की अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए ये समय बंद रहता है विजिटर्स के लिए. सो यहाँ पे हमारी क्विज खत्म होती है, बट अभी हमें विनर्स का पता नहीं चलेगा. विनर्स का पता हमें चलेगा कल. सो वी हैव द रिकॉर्ड्स, वी हैव द स्कोर्स रेडी विद अस फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव अटेम्प्टेड द क्विज. बट ये स्कोर्स हम कल रिवील करेंगे, और उसमें से टॉप 3 जो हैं उनका नाम कल एंड में अनाउंस करेंगे. सो जिन्होंने भी आज क्विज ली है, प्लीज डू जॉइन अस टुमारो. क्या पता आप क्विज के विनर हो और आपको हमारे प्राइजेस मिल जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्विज. I will now stop sharing my screen and welcome back your host, Anubhuti. So could we pause the video for a bit? Thank you so much, Tushita. Yeah, you can take this. Hi, everyone. Thank you so much for participating in the quiz contest. I'm sure you enjoyed it. I'm sure you had a very fun-filled and a challenging time. You would have grilled your memories. You would have delved into all your knowledge and your textbooks and all your gyan, and would have attempted the questions that we had for you very quickly, very promptly. You know that this is the fastest finger first challenge. So if you have all the 5 answers correct, and if you have answered them really quickly, then you will have an exciting prize awaiting for you tomorrow, right? So yeah, so superstars, we had an incredible day. We wrapped up with our Zoom in style contest. We created delicious treats in our Chop Chat Chew Cookalong session. And lastly, we had our trivia contest, where you put your knowledge to the test in time. You all did an amazing job, and you made our day so much fun. Tomorrow promises to be just as exciting. We'll kick off with Voice Your Choice poll, followed by a creative nest making session, and then we'll embark on a thrilling scavenger hunt. Plus, we'll be announcing all the winners from today's activities. Let me also announce this in Hindi once. तो आज का दिन आई थिंक हमारा बहुत मजेदार रहा है. हमने सुबह सुबह जूम इन स्टाइल कॉन्टेस्ट किया है, उसके बाद हमने एक बहुत ही टेस्टी ड्रिंक और सलाद भी बनाया, और उसके बाद हमने अपनी सारी नॉलेज को टेस्ट पे रखा और एक क्विज कंडक्ट किया. और अब हमारे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग दिन रैप अप हो रहा है. कल के दिन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लाइंड अप है. सबसे पहले एक वॉइस योर चॉइस पोल होगा. उसके बाद हम एक वर्कशॉप करेंगे जिसमें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमें एक घोंसला बनाना सिखाएंगे छोटी छोटी चिड़ियों के लिए. उसके बाद हम एक स्कैवेंजर हंट एक्टिविटी करेंगे. स्कैवेंजर हंट में हम आपको कुछ एक्साइटिंग टॉपिक्स देंगे और आपको अपने आसपास से उनको ढूंढ के लाना है. तो मेक श्योर कि आप अपने आसपास की चीजों के बारे में जागरूक रहें और उनके बारे में जानें. That is all what environment is about. So rest up, stay excited, and get ready for another fantastic day of fun and learning. Right? I'm sure you enjoyed the day today. And before we close, let me once again remind you that we have a very exciting
monthly edition of the Gobo Times, available for you, fully free, easy for download, right on the Young Environmentalist website. You can check all our editions. They are on various topics, different topics that excite you. I'm sure you would love going through their pages. As I mentioned, they are on millets, they are on microplastics, they are on fire, uh, landfill sites that you just attempted a question on. They are on honeybees, which is my latest edition, and they are on various other topics which you can glance through. In fact, I would also request my colleagues, if possible, to glance through the page of Goba Times so that all our excited participants can take a look. From here, you can easily download it. And if you want to get published with us, do send your stories and articles to me at our email ID, which is young@downtoearth.org.in. So here is our Goba Times page where we have all the various editions uploaded for you. So just as I was saying, we have one edition on biofuels. This is our latest GSP edition. A lot of you are from our Green Schools program schools. We have a very interesting edition on melanin, and then we had on rag pickers, the waste collectors, and then we have it on air pollution, the COP, we have on teachers, on the Chandrayaan, on molds, and various other topics. Just a glimpse through the page will tell you about the various issues that are addressed. In Goba Times, you can understand very difficult, complicated environmental stuff in very simple, understandable, and interesting manner, which is tailor-made just for you. Okay. And if you are willing, and if you have an author inside you, and if you want to submit your stories, please send it to us at young at the rate young. One of my colleagues will put the email address, and you can send all your stories and contributions to us, and we would love to publish you anytime. Okay. So I would now request all of you to perhaps unmute yourself, and you can then give us your reactions, make your comments, and anything that you want to say. Okay, so a query in the chat strip is about if only winners will get the prizes. Well, yes, prizes are there for winners, but certificates are there for a lot of you. So just as I mentioned, if you have, based on your attendance, we will have participation certificates based on whether you have your video on throughout the session, you will be getting the certificates. Further, winners will definitely get certificates along with prizes. And more details on this are also mentioned in the digital kit that we have sent you. So make sure you go through the digital kit. Also keep all your material ready for the build along session, the nest making session, which is there tomorrow. Let me also make the announcement once in Hindi for all my guests. तो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गोबर टाइम्स मैगजीन है. आपने उसका पेज अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था. प्लीज उस मैगजीन को जरूर विजिट करिए. वो मैगजीन केवल आप लोग के लिए है, पर्टिकुलरली आप ही लोगों के लिए है. उसमें हम बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार तरीके से बच्चों के लिए पब्लिश करते हैं. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज अपने आर्टिकल्स मुझे भेज सकते हैं. मैं खुद उनको रीड करूंगी और जरूर आपके आर्टिकल्स को हमारे मैगजीन में और हमारी वेबसाइट पे पब्लिश करूंगी. ये मैगजीन आप ही लोगों के लिए है और सारी मैगजीन्स में आप ही के जैसे आप ही के कुछ क्लासमेट्स के आर्टिकल्स भी हमने डाले हैं. आपको उन्हें देख के, उन्हें पढ़ के बहुत मजा आएगा.
वो मैगजीन में बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पे कवर स्टोरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप जरूर हमें अपने एंट्रीज भेजिए, और कल के लिए जो भी आपको बिल्ड अलॉन्ग घोंसले वाले सेशन के लिए आपको मटेरियल लेके आने हैं, वो आप जरूर लेके आइएगा। वो सारे मटेरियल्स हमारी डिजिटल किट में मेंशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ई कैंप एक्स्ट्रावेगेंजा वाले पेज से, और आप तैयार हो सकते हैं कल के सेशन के लिए। बहुत आसान सी इजीली अवेलेबल चीजें हैं जो हमने आपको रिक्वेस्ट की है। तो 11 बजे सुबह कल आप तैयार रहिएगा। ओके, सो आई एम श्योर दैट आप सबको हमारे साथ मजा आया होगा। कैसे 2 घंटे निकल गए हमें नहीं पता चला, सो आई एम श्योर आपको भी नहीं पता चला होगा। अब हम आप सबको अनम्यूट करते हैं और आप सबके एक क्लोजिंग रिएक्शंस लेते हैं। प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो आपको कैसा लगा। All right, everybody, we have unmuted all of you, so you are set free. मैम मेरे को बहुत मैम रिवॉर्ड्स क्या क्या होंगे? मैं लव बहुत अच्छा लगा। All of the recipes. Ma'am, I do not have. Ma'am, website पे भेजना है वो आर्टिकल में मिक्स milkshake, but still I love it. हमें वो आर्टिकल की वेबसाइट पे भेजना है। मैम मुझे भी अच्छा लगा। मैम हमें वो आर्टिकल किस वेबसाइट पे भेजना है बता दो। दे देंगे। मैम मैंने न्यू ड्रिंक्स ट्राई किए मैम, अभी मैंने ओके मैम किस वेबसाइट पे भेजना एक बार फिर से बता दो। वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। बाय बाय कह सकते हैं, हम आज का क्लोज करते हैं।